Good morning, all of you. Welcome back to our chapter 3rd of Social Studies, and that's related to cultural heritage of India, sculpture and architecture. In the previous lecture, we had done some terms like sculpture, architecture, that's what you mean by it, and how the word Vastu is said to be connected to the word architecture. Vastu is a Sanskrit word, and how the town planning was done in ancient time, and which town had the best town planning. So all these things we had done, and few short, very short informatory videos also we had seen. And we move ahead with the next part of this chapter, that is a short note on Mohenjo-daro. In 1922, there were archaeologists named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahani, and they found out remains that is बहुत साल पुरानी चीज़ अगर कोई एक्सकवेशन के बाद जैसे हमें ज़मीन के नीचे से मिलती हो टूटी फूटी हालत में, एंड कुछ उसके बचे कुचे पार्ट्स, तो Dayaram Sahani and Mr. Banerjee, they found out these remains of huge town planning during excavation work, which was being carried out under the guidelines of Sir John Marshall and Colonel Meek in Larkhan district of Mohenjo-daro. Larkhan is now in Pakistan. Mohenjo-daro means the heap of deaths. Very important, you'll have to learn it. So first of all, in which particular year the two archaeologists found out the remains of the huge town planning? That is in 1922. Who are these two famous archaeologists? That is Mr. Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahani. Under whose guideline they carried out this work? That is under the guidelines of Sir John Marshall and Colonel Meek. Now where is this huge town planning? Where was it found? That was in Larkhan district. That's in Pakistan now. And what do you mean by Mohenjo-daro? It means the heap of deaths. Now here the meaning is provided to you. What do you mean by archaeology? That is the study of human history and prehistory through the excavation. Excavation तब तक पता ही चल गया होगा तुम्हें, खुदाई का काम, but specially for the study of history and many more research works. So you can say the study of human history and prehistory by carrying out the excavation of sites and analyzing of artifacts and other physical remains. Artifacts also you must be knowing, दो वो पुरानी चीज़ें जो हमें मिलती हैं खुदाई के बाद, ऐसी चीज़ें जो हज़ारों साल पहले बनी हो, जो आज कहीं ना मिले, हाँ कॉपी कर सकते हैं सेम वैसी चीज़ आज हम, बट the original we get only once, and that is what they found, that is artifacts. तो उसकी फिर स्टडी होती है, बहुत सारे बाकी के जो फिजिकल रिमेन्स उनको मिल रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टडी को हम कहेंगे आर्कियोलॉजी. और जो ह्यूमन बीइंग और द पीपल हु कैरी आउट दिस स्टडीज कॉल और दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. नाउ एज यू मूव अहेड यू विल सी how the town was constructed. We saw last time. One more video you will see attached to this, that is construction of town. Now from the point of view of town planning, Mohenjo-daro is the best. Now please remember that here it is HEN, so rectify it in your textbook also. So from the point of view of town planning, if you go to see, तो सारे टाउन प्लानिंग में बेस्ट किसका प्लानिंग था? मोहेंजोदारो. हाउसेज वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ. अब प्लिंथ मतलब कि हम कहेंगे जस्ट टेक इट एज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म. एक कॉमन लैंड पे एक एरिया हम थोड़ा रेस कर देते हैं और उसके ऊपर घर बनाना शुरू करते हैं, सो दैट जब बारिश हो या फ्लड आ जाए तो घर तक पानी ना आ जाए, घर के अंदर पानी ना आ जाए, राइट. सो टू प्रोटेक्ट योर हाउस फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस मतलब गीलापन. जैसे अहमदाबाद में हम कई जगह पे ऐसे सुनते हैं कि बहुत बारिश होने की वजह से घर में पानी भर जाता है,
बिकॉज दोज आर लो लाइंग रीजन। लेकिन उस ज़माने में उन्होंने टाउन को प्लान ही इस तरह से किया था कि बहुत ज़ोरों की बारिश हो तब भी घर में पानी ना आए। दैट इज़ बाय बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग द हाउस ऑन अ हाई प्लिंथ। हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरीड, मतलब कि 2 फ्लोर्स। अब जो पैसे वाले थे उनके घर 2 फ्लोर्स के थे और उनके 5 से 7 रूम होते थे घर के। वेल दोज हु वर पुअर, तो उनका घर भी कुछ कम नहीं था। 1 story, that is 1 floor having 2 or 3 rooms। अब ये पूरे टाउन को वो लोग कवर करते थे, सराउंड कर देते थे विथ ए ह्यूज वॉल। इसको हम कहेंगे टाउन वॉज फोर्टिफाइड। जैसे तुम देखते होंगे कि बहुत लोगों के जिनके खुद के बंगलोज हैं, बिग बंगलोज, तो एक बड़ी दीवार, ऊंची दीवार बना देते हैं अपने बंगलों के सराउंडिंग में टू प्रोटेक्ट देयर हाउस। यहाँ पे पूरे टाउन को वो लोग फोर्टिफाई करते। मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज ओपन ऑन द साइड लेन, नॉट ऑन द मेन रोड। आज अगर हम कोई नया घर खरीदने जाते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई मेन रोड की तरफ फेस होना चाहिए, या जो हमारे दरवाजे हैं घर के तो वो भी मेन डोर, जो मेन डोर दैट यू कॉल, वो मेन रोड की तरफ खुलते हुए होने चाहिए। बट इन दोज डेज पीपल नेवर यूज टू construct their houses with their windows or main doors on the main road facing side। हमेशा साइड की लेन में उनके डोर्स होते थे ताकि घर साफ सुथरा रहे, धूल मिट्टी ना आए घर में। And the remains of storehouse, kitchen, bathrooms were found in every house। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे के टाइम उनको स्टोर हाउस भी मिले, उनका टूटा फूटा जो बचा कुचा मिला था, किचन मिले थे, बाथरूम्स। देयर वाज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउस एयरी एंड वेंटिलेटेड। आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है दैट पीपल इंस्टेड ऑफ स्टेइंग दिस वे, राइट, मतलब कि टेनामेंट, बंगलोज, रॉ हाउसेज, आज हम यूं रह रहे हैं। दैट इज 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 10th फ्लोर, 28th फ्लोर। तो बड़े बड़े ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं। रीजन, मोर पॉपुलेशन, लेस स्पेस। तो वेंटिलेशन की बात तो बहुत दूर की हो जाती है, हेल्थ एंड हाइजीन की तो उससे भी दूर की हो जाएगी। If you go to Bombay, you will see, you go to highly populated cities, you will see कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं वहाँ पे just imagine what would be the condition of the people related to ventilation। फ्रेश एयर आने की जगह कम होती है, हेल्थ हाइजीन काफ़ी मेंटेन नहीं होता। बट तब के ज़माने में हेल्थ हाइजीन का ध्यान ज़्यादा रखते थे। डोर्स और विंडोज ऐसे होते थे घर के कि पूरे हाउस में, पूरे घर में लाइट तो रहती ही थी और एयरी भी रहता, घर वेंटिलेटेड रहता। तो दैट वाज वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। नाउ रोड्स। अब रोड कैसे बनते हमारे यहाँ, तो आज भी तुम देखो तो कहीं पे भी कोई भी गली कहीं और अटैच हो जाती है। कहीं से भी निकलो तो कहीं लाइक 1 लेन अटैच टू सम अदर एंड देन द 3rd एंड द 4th। तो टाउन प्लानिंग आज इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि उस ज़माने में होती थी। रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। द रोड्स वर 9.75 meters wide, learn it। स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट राइट एंगल, मतलब एट 90 डिग्री। तो जो छोटे रोड्स थे वो मेन रोड को एग्जैक्टली राइट एंगल पे वो क्रॉस होते एंड द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर लॉट मेनी व्हीकल्स टू पास एट अ टाइम। नाउ हियर यू नीड नॉट थिंक अबाउट कि उस ज़माने में कौन से व्हीकल्स होते थे। व्हीकल डजंट ओनली मीन रनिंग ऑन पेट्रोल, डीजल एंड ऑल। इट कुड बी कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, इट कुड बी एनी। बट रोड्स इतने वाइड थे, वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, कि इतने वाइड कि एक टाइम पे बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ आसानी से आगे बढ़ सकते थे।
अब उसी रोड के दोनों ओर देखो तो खड्डे मिले लोगों को, ये आर्कियोलॉजिस्ट को. नाउ व्हाट डज दिस पिच सजेस्ट? तो ये माना जाता है दैट शायद वो पिट हमें ये बता रहा है कि वहाँ पे उस ज़माने में लैम्प पोस्ट होते थे. लैम्प पोस्ट मतलब स्ट्रीट लाइट्स. रोज ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोज विदाउट एनी टर्न. टुडे यू सी कि हर एक थोड़े से, आई वुड से 0.25 और हाफ, और आफ्टर 1 किलोमीटर एक राइट में टर्न आ गया, फिर थोड़े आगे जाओ लेफ्ट में टर्न, और आगे जाओ तो फिर से कोई लेफ्ट में टर्न और राइट में टर्न, and lots of traffic jam and all. In those days this was not the case. The roads first of all were wide enough. Next, roads of the town were straight main roads. अब ये जो मेन रोड थे वो स्ट्रेट थे, काफी कम टर्न्स होते थे. This is said to be a speciality of that time road. There were two main roads. One was going north to south, naturally the other east to west. लेकिन ये कट कहाँ पे होते? एग्जैक्टली एट राइट एंगल. अब ड्रेनेज सिस्टम तो यू कैन से इट वाज द बेस्ट. ड्रेनेज सिस्टम लिंक्स अस विद हेल्थ एंड हाइजीन. जितनी बेटर ड्रेनेज सिस्टम उतना उस एरिया का हेल्थ हाइजीन मेंटेन होगा. ना तो ड्रेनेज पाइप का ओवरफ्लो होना, ना रास्ते पे गंदा पानी का ओवरफ्लो होना आधी रात को, एंड लॉट मेनी थिंग्स दैट वी सीन टुडे बिग सिटीज, एंड दिस लीड्स टू मेनी डिजीज. बट दैट टाइम दे टुक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन. सो ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर of this town planning. Such a drainage system was found nowhere except in the island of Crete in the Mediterranean Sea. तो उस ज़माने में अगर बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम मिला उनको तो वो था क्रेट आइलैंड पे, और ये क्रेट आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है. दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन अवे डर्टी वाटर आउट ऑफ द टाउन. मतलब कि हर एक घर में एक पतली सी पाइपलाइन अटैच होती जिसमें से उनका गंदा पानी फ्लो हो जाता. अब हर एक घर की अपनी प्राइवेट ड्रेनेज पाइप वुड गेट कनेक्टेड टू द मेन टाउन ड्रेनेज पाइपलाइन, और हर एक घर में, एंड दिस सिस्टम वाज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट ऑफ द टाउन, एंड ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेसपिट. सेसपिट मतलब खड्डा. इफ यू गो टुडे टू वेरी interior parts of Gujarat, somewhere very remote villages, जैसे कि एक है, you can call it near मौरी से भी आगे, विजापुर side, you will find a very small and a very remote village. शायद अब तो कोई रहता भी नहीं होगा वहाँ पे, but it is said that वहाँ पे हर एक घर में एक सेसपिट होता था, खड्डा. अब वो सेसपिट इसलिए था हर एक घर में, एंड दे नेवर यूज्ड टू हैव लाइक लॉट मेनी बेडरूम्स एंड अटैच्ड वॉशरूम्स एंड लॉट मेनी थिंग्स. दे हैड 2 or 3 रूम्स, लेकिन जो उनका मेन रूम था वहाँ पे एक सेसपिट. अब वहीं पे कपड़े धोना या बर्तन साफ करना या बाथ लेना, अब जो भी पानी, गंदा पानी उस सेसपिट में कलेक्ट हो जाता. Now it used to happen in this way कि जैसे ही वो मतलब खड्डे का पानी ऊपर तक अपने ब्रिम तक आ जाता तो अपने आप वो ड्रेन हो जाता एंड मिक्स अप एंड फ्लो इनटू द मेन टाउन ड्रेनेज पाइप. मतलब वो खड्डा वापस खाली, फिर से जब अगर वो भरता पानी से, गंदे पानी से, तो फिर से वो निकल जाता. तो हर एक घर में एक सिस्टम दी थी. This planned, systematic, efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. And a public bath, a huge bath was found at Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. आज अगर जैसे कई बच्चे या उनके पेरेंट्स
जो बड़े बड़े क्लब्स के मेंबर्स हैं, दे मस्ट बी गोइंग एंड एंजॉइंग स्विमिंग इन दैट प्राइवेट स्विमिंग पूल एंड ऑल. एंड व्हाट डू यू सी दैट हर एक लॉट जब निकलता है स्विमिंग करके तो पानी बदलते नहीं दिन में 10-15 बार. It may be 1 or 2 times, but usually the system nowadays is chlorine, which is put in to clean the water. लेकिन उस ज़माने में वो इस चीज़ में भी नहीं मानते थे. वो ये मानते थे कि पूरे पानी को ही निकाल दो एंड ड्रेन इट आउट, और फिर उस बात को, या व्हाट वी कॉल ए स्विमिंग पूल, उसे पानी से भर दो एक फ्रेश वाटर से, राइट? And there might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. अब जैसे आज भी जब लोग स्विमिंग करके और चेंजिंग रूम में जाते हैं, they have got that shower room and small changing rooms and all. तो तब भी ये फैसिलिटी होती थी शायद. It is written might. And this public baths might have been used on festivals and religious ceremonies only. तो शायद उस समय ये बड़े बड़े पब्लिक बाथ यूज होते थे ओनली ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज. एज वी मूव अहेड, नाउ वी कम टू पब्लिक बिल्डिंग्स. द रूइंस मतलब टूटा फूटा बचा हुआ जो उनको मिला एक्सकवेशन के बाद. द रूइंस ऑफ 2 huge buildings also have been found at Mohenjo-daro. They might have been used. शायद ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो 2 मिली, उनके टूटे फूटे चीज़ें, तो माना जाता है कि शायद उस ज़माने में ये 2 बिल्डिंग या तो यूज़ करते थे वो लोग एज अ टाउन हॉल, या एज अ थिएटर, या फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और मे बी टू स्टोर द ग्रेन्स फॉर द टाउन. द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग वॉज ऑल्सो फाउंड आउट. अब बैरक हम कहेंगे जैसे जो सोल्जर्स रहते हैं, एंड दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एकोमोडेट सोल्जर्स. And let's see a short video before we move ahead. The past of India goes back several thousand years. We learn about it from the evidences which our ancestors have left behind. Even when the paper was not made, we get the evidences from dry palm leaves, plates of copper, rocks and pillars, stone walls, clay tablets, etc. The weapons, potteries, and other tools found during excavation tell us about the life and culture of the people of those times. Discoveries in the recent days have contributed significantly to our knowledge in knowing the past. One such significant contribution from archaeologists was the discovery of sites at Harappa and Mohenjo-daro in the year 1920. The credit goes to archaeologist Dayaram Sahni, M.S. Watts, Mortimer Wheeler, R.D. Banerjee, Sir John Marshall, Alexander Cunningham, and others. The excavation done at these sites tells us about the life and culture of the civilization that flourished around 3500 BC on the bank of the river Indus. The Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization that was located in the northwestern region of the Indian subcontinent. Since many of the Harappan settlements are found on the vast plain of river Saraswati, which is dry today, it is also called as Indus-Saraswati civilization. The Harappan culture was spread over many parts of India, including the Sindh, Sukhta Gandhar in Balochistan, Punjab, Haryana, Western UP, Jammu, Northern Rajasthan, Gujarat, and Northern Maharashtra. The important Harappan sites are Kot Deji, located on the left bank of river Indus opposite Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga in North Rajasthan, Mehergarh in Balochistan, Mundigak in southern Afghanistan, Damsadad in the Quetta Valley of Balochistan, Amri near the Indus River,
Gumla in Komal Valley, Rahman Dehri, Dholavira, Lothal. Now let us have a look on the cities and buildings of the Harappan civilization. The cities and buildings built during Harappan times reflect their exemplary construction skills. The cities were divided into upper and lower parts. The upper part built on the raised platforms is the citadel. A citadel is a fortified structure designed to provide protection during a battle. This part included the public buildings, granaries, the great path, and more important, workshops and religious buildings. In the lower part, the people lived and carried out their professional work. Whenever the city was attacked or threatened by floods, the inhabitants of the lower city found refuge in the citadel. The granary was found in the citadel mount of Mohenjo-daro. Below the granary were the brick loading bays from which grains were raised into the citadel for storage. One of the most important features of the Harappan cities were the swimming pools popularly known as the Great Bath. The structure of the Great Bath is an example of their engineering skills. This brick-built structure measures 12 meters by 7 meters and is about 3 meters deep. It is approached at either end by flights of steps. The bath was surrounded by porticos and sets of rooms. There was also an arrangement to set hot water to boil. Water was supplied by a large well in an adjacent room. There was also a cobbled drain for disgorging water. Houses and streets of Mohenjo-daro. The lower city of Mohenjo-daro was properly planned. Here, the streets ran straight and at right angles to each other, the main street being about 10 meters wide. Houses were built on both sides of the street. Many houses were at least two-storied. Houses were built of brick and had thick, strong walls which were plastered and colored. The roofs were flat with windows and doors made of wood. Bathrooms were built on one side of the house and drains connected to the street drains. Street drains ran along the sides of the street and were lined with bricks to keep it clean. Some houses had their own wells. These houses belonged to rich merchants and high-class people. Other people who worked as laborers at the granaries and kilns lived in small one-room quarters. There are also evidences that the people domesticated animals such as goats and dogs. We also get to know about the clothing of Harappan people through some of the evidences. The finding of the clay spindles suggests that the cotton weaving and yarn spinning was practiced by women at home. It is believed that women usually wore skirts and men wrapped long pieces of clothes around themselves. Both men and women were fond of ornaments. Men wore amulets and women wore bracelets and necklaces. Ornaments made of beads of shell and of gold and silver were used. System of weights and measures were also well developed in those days. Weights and measures of various shapes and sizes with accurate grading are found at many sites. They are cubical and spherical in shape and are made of jet, jasper, and agate. Small clay carts found at some of the Harappan sites imply that bullock carts were in use. On the basis of the information gathered from Harappan seals, seal impressions, terracotta and metal figures, cemeteries, etc., we can come to a conclusion that worship of Mother Goddess was prevalent in the society. Other traits of later Hinduism, such as worship of Pashupati Shiva, sacred animals, trees, etc., were practiced by the Harappan people. Also, a large number of figurines depicting various yogic postures indicate the practice of yoga
by Harappans. The Harappans were expert craftsmen. The most famous art piece of the Harappan civilization is the bronze dancing girl discovered in Mohenjo-daro. Small clay carts, copies of carts drawn by oxen, painted jars reflect their interest and skills in art. The Harappan people had developed great skills in pottery. They decorated the pots with designs depicting snake, flower, etc. Potteries were more refined and decorated with a red slip and black paint. Clay button seals, copper dagger blades, bone tools, and varieties of painted potteries have been discovered from Harappan sites. The Harappan culture lasted for more than 1,000 years. The world's earliest urban civilization came to an end around 1300 BC. Natural calamities like floods, terrible epidemic diseases, and attack by wild animals are the suspected reasons for their decline. Although some aspects of the Harappan culture continued after their decline, those who succeeded Harappans knew nothing of city life. Thus, decline of the Harappan culture was a negative event in the history of India. So let's move ahead with the next part that is related to just now that we did over here about Harappan culture. Now, in 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Meek, Dayaram Sahani discovered some ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. The remains of Indus Valley civilization were found from Rapar in Himalayan region, Alamgirpur at Meerut in UP, Kalibangan in Rajasthan, Lothal at Dholka in Gujarat, Deshalpur Shikharpur in Kutch, Dholavira Rangpur near Limri in Saurashtra, Srinathgarh Rosari near Gondal, Kuntasi near Morbi and Somnath. So all these are the places from where the people after the excavation work, they found out the remains of Indus Valley civilization. The region of Sapta Sindhu river is a region of our Indian culture. Now that region where 7 rivers met, we did it in the first chapter. So the region of Sapta Sindhu river is a region of Indian culture. Culture which developed here is called Indus Valley civilization. Its remains were found first of all from Harappa. So people first of all found the remains of Indus Valley civilization from Harappa. So it is called Harappan civilization also. Copper and stone weapons we saw just now in the short video. And many other things were found from the region. That is why it is also called as Copper Stone Age. So could be asked as for one marker that why Indus Valley also known as Harappan? Because its remains were first found from Harappa. Second, why it is called as Copper Stone Age? Because copper and stone weapons and many other things were found in this region. Town planning of Harappan civilization was systematic. Its granaries and forts were remarkable as we saw. People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found. Dholavira, a huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization, has been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadirbir in vast desert of Bachau Taluka, which is about 150 kilometers away from Bhuj. So this you will have to learn that is where is Dholavira located. और एक बहुत ही सिस्टमेटिक टाउन एंशियंट टाउन मिला वेरी मच सिमिलर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये मिला था उनको 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस धोलावीरा विलेज 140 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भुज. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने सर्वे किया और सर्वे क्या किया उन्होंने मतलब किस चीज़ की रिसर्च की अबाउट दिस हीप ऑफ रुइंस. रुइंस मतलब जो बचा कुचा था पुराने ज़माने का जो मिला उनको. हीप मतलब
वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको मिली एट द टाइम ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन. उन्होंने सर्वे की, स्टडी की. आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया had undertaken the research work in 1990, special work of excavation was carried out under the guidelines of Ravindra Singh Bisht also. तो ये सारा काम अंडर द गाइडलाइंस ऑफ रविंद्र सिंह बिश्त उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया आर्कोलॉजिकल वर्क. एंड एज यू कैन सी दैट द remains of Dholavira palaces and main walls of town were painted with white color. अब इस जगह पे पैलेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन को वाइट कलर से पेंट करते थे. सच बिग वॉल्स, ह्यूज वॉल्स विच यूज टू सराउंड द टाउन. आई टोल्ड यू बिफोर, ये फोर्टिफाइड वॉल्स टाउन को एन सर्कल क्यों करती? उस टाउन को एनिमी के अटैक से प्रोटेक्ट करने. विच सजेस्ट दैट येस, that time the town has strong security. This wall is made up of clay, stone and bricks. Potable, that is drinking water, was available here, as well as proper system of water purification was also set up here, which is not made available to all even today in this modern age. So I stop over here and we move ahead in our third video related to this chapter 3rd. Till then, revise it. Thank you so much.